Keeping formality aside, today we will discuss about the emergency preparedness, on-site emergency plan. As per legal requirement, section 41B and GFR 1963 rule 68J sub rule 12, यहाँ पे ऑन साइट इमरजेंसी प्लान के बारे में डिफाइन किया गया है. एंड शेड्यूल नंबर 8A which is included in 68J rule number, details to be filled in on-site emergency plan. What is emergency? Emergency means a situation leading to a circumstances or set of circumstances in which there is a danger to the life or health of the person, or which could result in a big accident which interrupt in the sense ऐसा कोई circumstances है, situation है जहाँ पे बड़े खतरे होने का या फिर किसी इंसान की मृत्यु होने के चांसेस है, वैसे सिचुएशन को हम इमरजेंसी कंसिडर करेंगे. एंड इन सिंपल लैंग्वेज विच इंटरप्ट्स ह्यूमन डेली रूटीन और लाइफ, वैसे सिचुएशन जो ह्यूमन डेली रूटीन और लाइफ को इंटरप्ट करता है, उस सिचुएशन को भी हम इमरजेंसी कंसिडर करेंगे. लेवल ऑफ इमरजेंसी दैट इज माइनर और मेजर इमरजेंसी इन दैट कंडीशन इन विच हमें एरिया खाली करना है या फिर ज्यादा उसमें मोर देन 1% के फैटल होने या फिर मोर देन 10% के एक्सीडेंट होने का चांसेस है, या फिर वैसे सिचुएशंस है. माइनर इमरजेंसी इन विच हमें कॉमन माइनर स्पिलेज, माइनर फायर, जिसमें कि हमें प्लांट इवैक्यूएशन और लोगों को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इमरजेंसी टीम बुलाने की जरूरत नहीं है, दैट इमरजेंसी विल बी कंसिडर एज माइनर इमरजेंसी. So now emergency control management and their responsibilities. Who are the stakeholders inside the plant premises, like site man controller, incident controller, admin controller, as well as security team. Emergency service controller, ERT member, employees, and informer. Site man controller, whose responsibility to take decisions in case of emergency. Incident controller, whose responsibility to take care the location of incident. Admin controller, who is responsible for head counting, providing hospitality and other resources ordered by siteman controller. Emergency service controller, the person who will provide a mechanical, electrical and other means of help in case of emergency. ERT member, emergency team members, who should be available, like firefighter, first aider and a rescue team, who is present with their responsibility and the equipments, who will help in case of emergency. Employees and informer who will inform about the emergency and employ what to do in case of emergency. Now in here we will see who will inform in case of emergency. फर्स्ट इन्फॉर्मल हु विल सी, जिसने भी इमरजेंसी को देखा है या फिर जिसने भी फायर होते हुए देखा है, स्पिलेज होते हुए देखा, हु विल इन्फॉर्म फर्स्ट द पर्सन हु विल सी द इंसिडेंट, who will firstly inform their HOD, incident, and HOD will be incident controller. First informer can also directly inform to emergency control center, and HOD can also be also informed to emergency control center. HOD can be also informed by emergency control center. Emergency control center, then after getting the information from first informer, he will inform to SMC, siteman controller, admin controller, emergency service controller, EHS in charge, firemen and other ERT members who is in contact, and emergency service controller also directly inform to security, or security can also get information from admin controller. After the siren, all siren will be information to all employee, and all employee will evacuate after the siren blow towards the emergency location, that is assembly point. Now what are the action plan for emergency after information? IC will communicate with SMC, incident controller will communicate with siteman controller for giving details of emergency from incident location. इंसिडेंट लोकेशन से रेगुलर अपडेट जो इंसिडेंट कंट्रोलर एसएमसी को प्रोवाइड करेगा. आफ्टर इवैक्यूएटिंग आफ्टर इवेल्युएशन द इंसिडेंट SMC can declare emergency at site.
Emergency team member will assemble at assembly point near emergency control center with the required equipment. As required, ERT team member will deal with emergency team member इन केस इमरजेंसी उनके हिसाब से, अगर फायर फाइटर है, फर्स्ट एडर है, तो वो डील करेंगे इमरजेंसी के साथ. नाउ एडमिन कंट्रोलर विल स्टार्ट हेड काउंटिंग and incident controller will regular report update about the emergency to siteman controller. After emergency is under control or clear, all clear will declare by the siteman controller.